Hi guys, welcome to another episode of Figure It Out. Today, I'm bringing someone from a different field. Actually, I wouldn't say a field. Today, this podcast is about experience, and it's more like an experiential podcast. Till now, I have brought to you people from advertising, people from marketing, people from HR or different fields, fitness as well. But today we're going to talk about travel and how important travel is in a person's life. So for that, I have Tarang. Welcome to Figure It Out, and thank you for taking our time. So quickly, before we get into travel, let's just tell people what you do, because I don't want them to think if I a travel influencer hai. Life is more about than just being a travel influencer. So what is it exactly that you do for a living? Yeah, so I have spent 12 plus years in IT industry. Okay. I built a career by breaking things, I would say. So that it is what it is. So I'm into QA, quality assurance. So basically, we test the software and we have to ensure it's meeting the client requirements, and the application doesn't have a lot of bugs. So that is what I do. And currently, so you've always been a QA person, or you've transitioned into it? No. So when I passed out from college, I took a job in BPO. So basically that's what I did, because my results were not out and I was just waiting for my results. So I took that BPO job for 3 months, I think. तो वो क्या वो calling वगैरह वाला था? Call center, proper call center. ऐसा 10-12 rows है उसमें एक desk मिल जाता है. That was a blessing in disguise, because it prepared me for my next career. A lot of people don't act, मेरे को ये जमता नहीं कि मतलब बहुत कम लोग को पता है कि मैंने इनफैक्ट डोर टू डोर मार्केटिंग की थी एक बार, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज. पता नहीं क्या करना है, तो बोला चलो एक्सपीरियंस के लिए डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं. People look down upon these kind of jobs, but I think they teach you a lot of things for life. A lot of things. And to be honest, actually that played a very crucial role, because it was proper night shift, but it was North American project. And so it prepared me how to interact with others and all. Correct. And that's the most... communication skills to improve hota hai ye usse. बहुत ज़्यादा. And in IT and in QA, you need that, because when you are working in an setup wherein you have to interact with people from different regions, right? Someone's based in US, someone's based in Singapore. So you need that communication. Correct. Developers are... हर किसी का mindset अलग है, हर किसी का experience अलग है, तो तुमको rather than them adapting, you need to adapt yourself to them, so that you convince them. And in the sense, होता ये है कि people get into job, they take a job. Correct. And first time when they just get on a call with someone from States, जैसे accent आता है, they just पढ़ जाती है. So that's why I said it was a blessing in disguise, because I started my journey with that video thing, and it helped me. तुमने चालू ही सीधा Big Bang से किया. So फिर and then I took a job in TCS, and from there your journey began. TCS तो मतलब ऐसा लोग गवर्नमेंट जॉब ही समझते हैं. एक बार हायर हो गया तो जब तक तुम नहीं निकलो तब तक कोई निकालता नहीं. So it should be your last company. It was my first company, unfortunately, but I think I am thankful to. It teaches a lot. Yes, it does. Moving on. When was your first travel experience? What did it teach you? So it was. We've been traveling with family, throughout, say. सब लोग का उधर से होता है. अभी बचपन में पैसे थोड़ी होते हैं हमारे पास कि खुद से ट्रैवल करेंगे. महाबलेश्वर, लोनावला, we did that. But I went to UK for work for 1.5 years, and so I was there alone. Which year was this? This was 2017. Quite fairly recent. Yeah. So I went there and I went alone. So close setup hai, कि friends hai. Correct. We meet them every day. Family hai. So वहाँ जाओ, and then if you are staying alone, so at times what happens is you are staying alone, so you feel थोड़ा 2-3 महीने ठीक लगता है, बाद में फिर घर का याद आने लगता है. होमसिक तो होता ही है. वो बोलते हैं ना कि नई नई आंखें हो तो और मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में फिर घर अच्छा लगता है. क्या बात है. तो वैसी बात थी. So I thought I should do something which keeps me occupied. Correct. And मैं थोड़ा घर का याद वाद आएगा तो उससे थोड़ा diverted रहूंगा. So I went to Scotland. Okay. And सबसे नियर तो वही है. हाँ,
पास में तो वही है, and it's very beautiful. Scotland beautiful. मैं जब जा रहा था वहां पर तो फ्लाइट में एक मैगजीन पढ़ी मैंने, ठीक है. सो आई वाज जस्ट रीडिंग एंड आई रेड समथिंग व्हिच बहुत ज्यादा मुझे हिट कर गया वो, एंड दैट्स व्हेन यू नो आई थॉट यू नो आई शुड ट्रैवल मोर ऑफन. क्या था वो? वो ये था कि everyone has got 2 lives. Okay. The second one starts when you realize there's only one. So that is quite. Yeah. So I think I'm going to write this in your quote when I promote this. Like, you got 2 lives. The second one starts when you realize you have only one. So amazing. Yeah, and that has stayed with me till date, and it will stay. I don't think you can forget this. Yeah, because that was. I won't forget this. Yeah, because and that's when, like, you should at times, you know, you should sit back, think about yourself, what you want to do and what you really like to do, and then just follow that path. But abhi jaise you're telling ke, you know, sometimes you need to take a step back and think about yourself. It's not always easy to think about yourself when you are a 30-year-old guy in an Indian household. Certainly not. But yeah, I think then that's when the did that happen to you? Yeah, I'm still balancing it out and figuring. We'll come to that. We'll come to that. Yeah, I'm still. So Scotland जा रहे थे, magazine में पढ़ा फिर. So that's when I started traveling, and then every weekend I used to just get out, explore some new places, and I used to travel solo. And I mean, Europe में तो वो culture काफी है solo traveling का. Bag उठाने का. Yeah, backpacking, and they just move out and you meet new people. Right. You know, उनके culture के बारे में पता चलता है. Yeah. How they live and how they, you know, spend their entire teenage. Because what happens, this is an interesting thing that I learned from one Australian guy. Okay, so he was a Chinese but second generation Australian. So उसने मुझे बताया कि अपने यहाँ पे लोग पेरेंट्स सेव करते हैं और डॉटर्स मैरिज या सब वगैरह के लिए. तो वहाँ पर घर बनाने के लिए, बिकॉज लोग बाहर चले जाते हैं, राइट, बच्चे, और बाद में दे मैनेज 18-20 ईयर ओल्ड के बाद तो खुद देमसेल्फ. तो वहां पर उनके पेरेंट्स, ये चाइना में था, सो देयर पेरेंट्स दे सेव अप फॉर देयर किड्स टू ट्रैवल एंड सी द वर्ल्ड. रियली? They just give them a budget, like, wow, you manage and you do whatever you want to do with this. So because that's the best learning experience, right? I mean, तुम दुनियादारी जान जाओगे, not necessary कि तुमको कहीं बाहर ही जाना है. करेक्ट. तुम लोग मतलब अपने देश में ही घूम सकते हो. इंडिया में भी ट्रैवल इजी है. मतलब just saying कि यार travel is not always going abroad. Travel is, मैं मतलब जैसे तूने बोला कि माथेरान, महाबलेश्वर, करजत भी चले जाओ यार. उधर you learn how to manage your finances, how to, you know, extract that specific funds for your travel. So बहुत कुछ सिखा देता है. So तो स्कॉटलैंड गए, फिर you know you came back. I'm pretty sure you started working here. And then how did you manage your work and you know your travel part over here? Because तभी तो अकेले थे, तो जब चाहे बैग उठा के निकल लिए. अभी फैमिली है यहाँ पर, फैमिली के 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं. वीकेंड पे अगर तुम नहीं रहो तो बोलते हैं यार तू तो वीकेंड में अपना ही काम करते रहता है, मेरे पे कभी ध्यान देगा, घर का भी काम होता है, वो कौन करेगा? तो so how did you balance that out, and how do you still manage? So basically, of course, I mean, traveling it's not a very थोड़ा expensive पैशन और एक्सपेंसिव हॉबी. शौक बड़ी चीज है. हाँ, शौक है वो. तो I you know, work on weekdays and save up a lot of money for me to, you know, travel to new places and explore. So I have opened up a lot of you know avenues. कैसे बताऊं कि यार बहुत सारे और दूसरे sources, different avenues for you which to can fund my travel expenses. So like I do invest in Indian stock market, then I invest in US stock market. So I try to, you know, extract funds for my traveling, for my passion through these sources. So yeah, that's so amazing. Like, you know, I think you're touching upon another aspect. Actually, 2 things I can take out from here. One is you need a job, you need a source of income, a source of income to fund your passion. Yes. Right? Yes. Second is, if that source is not enough, find other sources also that can complement it. You have to, because when you have a hobby, I mean, be it photography, be it any other hobby, right? Correct. You need funds to, you know, be able to. I think I need to ask you this question.
did you ever think, like, you know, a lot of these with the Instagram generation, I would call it Instagram generation, social media generation, तो social media generation अभी बचा नहीं है, now it's an Instagram generation. Did you ever think you want to become a travel influencer and earn out of that? Make basically the reason I'm asking you is because did you ever think कि मेरे को मेरा passion को profession में करना है और मैं उससे पैसा, because I see a lot of these travel influencers. Yeah, when you have luxury, I mean, your primary job can take a backseat. That's Correct. when it's possible because you work 9 hours, 10 hours a day. I also, invest in stock markets. Like, Correct. So Indian stock market 9:15 बजे और फिर बाद में रात को 12 बजे तक US stock market पे रहता है. So उसके बीच में तुम्हें टाइम निकालना है to edit your videos because editing game is top notch these days. Ask me, मैं तो खुद ये podcast खुद edit करता हूँ. So, but if you look at this travel influencers, like their editing game is top notch. Yeah. And it takes a lot of time. So, but that's not the answer actually I'm looking for. मतलब तू कहीं ना कहीं बोल रहा है कि तुझे करना है वो. नहीं, करने की इच्छा नहीं है. क्यों? नहीं, क्योंकि मैं मतलब मुझे वो मेरा प्रोसेस में है ही नहीं कि यार मुझे वो उस लाइन में जाना है कि यार मुझे. Do you think you will lose out your happiness from your passion if you turn it into your profession? Because अगर तुमने उससे कमाया नहीं, ठीक है, एक तो रहता है तुमको एक स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारा भी फिट है, ठीक है, एक सर्टेन लाइफस्टाइल तुम. बट ट्रैवलिंग इज फॉर माय सोल यार. आई मीन exactly my point कि जब वो एक we live in a capitalist world, okay, it's as simple as that. एक certain amount of money तो तुमको चाहिए ही जीने के लिए, right? अभी अगर तुमने ट्रैवल को अपना प्रोफेशन बना लिया, which is your passion, right? Do you think there could be a होना नहीं चाहिए if you ever get into it कि कभी तुमको 1-2 महीने तुमको उतना opportunities नहीं आए कमाने के लिए? Do you think you will lose out that spark of joy you have when you're traveling right now? Maybe that is one of the reasons why you want to keep it as a travel for the soul and use money from here and invest it over here. Basically, I never thought about becoming a travel influencer. That's the whole point. Like, okay. I travel, and the only reason why I post it on Instagram is just, there's this like one pin board. मेरा pin board है. उसके लिए Pinterest exist करता था, but अभी Pinterest को जाता नहीं है. It's very simple for on Instagram to I just keep everything there because I still my first love is computers, so that's still there. That's why I've got a full-time job, like, and I do the side hustle. Correct. For my traveling. This is actually somewhere where I also have for my sports. 5 दिन काम करो, 6-7 दिन जो रहता है तुम्हारा सैटरडे संडे वो स्पोर्ट्स में गवाओ या अपना कुछ भी जो भी करना है, जो भी तुमको खुशी देती है. जैसे हम ये संडे सुबह को पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, this gives me happiness, so I'm doing it. Exactly. Right. So travel for soul. Yeah. Do you want to elaborate on that? Like some experiences which have changed your life. Like हर कोई ये बोलता है कि यार travel is an experience. Do you want to touch upon how that has helped you be a better person? Like because if it's not making you a better person, what's the point of doing anything? No, it's not just that. It's if it is giving you happiness. I mean, but happiness does transform into you becoming a better person. It does. Right. Because when you travel solo, okay, that's about solo traveling. Because when you travel solo, you meet a lot of so एक networking हो जाता है. First thing first, and there's a lot to learn from other individuals who've been doing a lot of other things in their life. Yeah. So that's second aspect to it. Third thing is, like I said, you learn to manage your finances. Correct. So जो 5 दिन में you are trying to balance it out, and then तुम्हारे investments है. So I wouldn't have opened the doors of US stock market if it was not for this traveling, because I wanted to sow some funds out of it as well. So it got me into that, and now I'm becoming a better investor, I would like to believe. So overall, it has helped you on your personal growth as well. Certainly. In one part, because if you want to go to a place, okay, and there's I think एक वो basic अपने को school में saying होता था ना, where there is a will, there is a way. True. You find out ways to actually reach there. Fund your So जैसे another thing what I can take out of it is कि भाई तुमको उधर पहुंचना है, ठीक है, अब तुमको उधर जिद है, तुमको उधर पहुंचना है. हाँ. अब कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर. You try to find out different ways to do it. Correct. अब मेरे को देखना है लॉर्ड्स में टेस्ट में. So देखना है बस. जाना है तो जाना है. You prepare yourself. Correct. You find out ways to
But how does that help you in your regular life? Not in your travel life, but in your regular life. Apart from becoming a future Harshad Mehta or something. नहीं. So basically on that terms ऐसा है कि यार एक empathy you start developing. थोड़ा empathy आ जाते हैं तुम्हें because when you meet lot of people. Correct. Okay, you are connecting with a lot of them, right? When you're traveling, so it gives you a different perspective, and then you start respecting their point of views. You get out of your own shell, and तुम सोचते हो कि भाई दुनिया मेरे ये छोटे ककून से बहुत बड़ी है. और बहुत चीजें हो रही है दुनिया में जो हमको पता ही नहीं. सेंटर ऑफ द स्टेज पे नहीं हो, just somewhere, and you realize how minuscule you are in the grand scheme of things. Correct. So yeah, I think that humbles you. हाँ, और वो empathy वाला एक फैक्टर तुम्हारे में certainly आ जाता है because then you start respecting सबके point of views, right? I mean, it's not like आप अगर ज्यादा लोगों से मिलोगे नहीं, बातें नहीं करोगे, तो होगा ये कि यार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा point of view है and you become more rigid. Correct. So it helps you, just calm down and you just think from, So you become more of a inclusive person rather than just being in your own self. Certainly. And मतलब तुम एक selfless भी बन, if I may, मतलब एक तुम selfless बन जाते हो कि भाई ठीक है यार उसका भी कुछ होगा, हम उसके लिए कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या है? You start respecting others emotions more. And ये चीजें friendship में बोलो तुम या तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप या फैमिली, उसमें भी होता है. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इसी वजह से आते हैं बिकॉज यू वांट टू प्रूव दैट नहीं यार मैं ये बोल रहा हूँ दिस इज राइट, बट देन यू स्टार्ट जैसे ट्रैवल करते हो तुम बिकॉज इट हम्बल्स यू. you're meeting someone and वो stranger है, so you won't start arguing right away, right? So then you just think कि यार नहीं इसका point of view भी सही होगा, so you start respecting that and that helps you in all of these. मैंने ना एक ही चीज मतलब I don't know, I might be wrong, मैंने एक ही चीज notice की है बहुत लोगों में, I don't know if it's the case with you. हम जब तक है ना ये जैसे people don't like listening to their close ones initially. उनको है ना जब कोई दूसरा stranger बोलता है ना वो ज्यादा जमता है and then that transfers back into their personal life with their family. 100%. I don't know if that happened with you. 100% होता ही है, होता है. Why does that happen? Why did it happen with you? That's human. That's human nature. Why don't you trust your own family? No, everyone does. But होता ही है ना कि यार वो बहुत बार सुनते हो ना, जैसा लगता है कि people start imposing themselves on you. नहीं, वो थोड़ा they start taking everyone for granted. मतलब closed ones है यार, ठीक है यार. But like ऐसा कोई बाहर से कोई stranger बंदा बोलता है ना अरे यार ऐसा, तो तुमको लगता है कि यार ये मेरे को क्यों ऐसा बोलेगा, मतलब इसका क्या एडवांटेज है इसमें. तो ह्यूमन नेचर व्हाट यू ट्राइंग टू टेल मी इज दैट कि हमको ये लगता है कि थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाता है एंड देन वी थिंक दैट द अदर पर्सन इज टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड. बट थोड़ा घर में ऐसा हो जाता है ना कि यार ठीक है. बट यू नो व्हाट आई पर्सनली फील, दैट्स जस्ट माय ओपिनियन. आई थिंक if you don't take your loved ones for a little bit of granted, then what's the point? What's the point? Yeah. मतलब तुम वो सिक्योरिटी रहती है तुमको एक रिलेशनशिप में. I'm not just saying like a partner or something, also with family, right? अभी कल को मेरी मॉम को पता है कि भाई ये मेरे को बोल देगा साजन ये कर ले जरा, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है क्योंकि अब बेटा है यार और किससे एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? मतलब तुम अपने एक लव्ड वन से एक्सपेक्ट करोगे ना कि you will हक से बोलोगे. I would rather say granted नहीं है, एक हक रहता है. और वो people constitute think of it in a way that कि तुमको taken for granted ले रहे, but it's not actually the case. True. I think people should be a little more open and think of it from the other perspective. Empathy से भी ज्यादा एक सोचो भाई, you're 33, I'm 33 or I think you're 34 now. 34, sorry. I don't know your age, dude. Anyway, like इतना हो गया लाइफ में एक्सपीरियंस कि एक चीज रियलाइज किया बस कि फैमिली इज द एंड थिंग. मतलब दोस्त कितना भी बोल लो, फैमिली खड़ा रहता है. फैमिली रहता है, यस. कितना भी बोल लो, और जो तुम उनको बोल लो कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, वो ही खड़े रहते हैं तुम्हारे साथ एंड में. 110%, yeah. Right, so I think we need to it has helped you improve your relationships with your family also. So I mean
good that it has helped you in all the aspects. Just where all have you traveled? Like we didn't touch upon that. Like where all have you traveled? You said UK and Scotland, but in India or anywhere outside, like India as well. So इंडिया में साउथ कवर कर लिया है, सेंट्रल पार्ट भी हो चुका है, नॉर्थ राजस्थान साइड भी हो गया. राजस्थान में हमारे एक दोस्त की शादी भी लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स ओवर देयर. शादी के कभी डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए. ठीक है. सो या नॉर्थ ऑफ इंडिया भी हो चुका, ईस्ट थोड़ा बाकी है, नॉर्थ ईस्ट बाकी, यूरोप मोस्ट ऑफ द यूरोप इज डन. ईस्टर्न साइड, ईस्ट में अभी प्लान है. हाँ, कभी यूएस, मेक्सिको, ब्राजील जाना तो है, बट वही देखते हैं क्या होता है. सो स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर, हाँ, कुछ मेहरबानी हो जाए. So the reason I asked is like, what do you prefer, traveling abroad or within India? So it depends यार. अभी इंडिया में देख लिया तुमने कुछ चीजें. So basically I have a wish list, right? So मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, ठीक है. So इंडिया में और ऐसी 2-3 चीजें हैं जो मुझे करनी है. तो वो जब हो जाएगी जब अपन देखेंगे कहीं बाहर कुछ जा सकते हैं तो. सो हाँ, ऐसे कोई लंबी लिस्ट नहीं है, बट वो वर्क इन प्रोग्रेस रहती है. तो मतलब ऐसा ये नहीं कि यू डोंट थिंक ऑफ इट कि मुझे इंडिया या बाहर का, तुम्हारा एक वो विश लिस्ट है, तुमको वो पूरा करना है बस. एक बकेट लिस्ट जैसा होता है ना कि यार मुझे ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस करना है, ये देखना है. I know it's a controversial question which I'm going to ask. I know there is no right answer to it. Probably you might even not answer this, but still just asking कि इंडिया में लोग बेटर मिले हैं कि अब्रॉड when you're traveling? Strangers I'm talking about. हाँ, open minded बाहर ज्यादा. मतलब open minded थोड़ा open minded as in जैसे मैंने बताया कि appreciating your thoughts, है ना, because everyone is curious over there to learn about your culture. अब जैसे कि बाहर वो लोग ने भी दुनिया घूमी है, and when they meet you, so they try to understand your culture. और अपने कल्चर में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हो सकता है उनके थॉट्स को मैच नहीं करती है, बट दे स्टिल वुड हैव एन ओपन माइंड. What about Indians? कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत वो कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, बिकॉज यू मीट ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ना. अपने यहाँ पर तो और ज्यादा वेरिएशन है ना लोगों का. मतलब अपना रीजन्स बहुत डिफरेंट है, तो हर रीजन का अलग अलग अप्रोच है, हर रीजन का अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग उनका बैकग्राउंड है. वहाँ तो वो भी एक एक्सपीरियंस ही है ना. एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स. मतलब देयर इज नो राइट और रॉन्ग, देयर इज नो पॉजिटिव नेगेटिव, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस. नहीं, वहाँ राइट और रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं. जस्ट ये बोल रहा हूँ कि ओपन माइंडेड थोड़ा जो होता है ना कि यार दे वुड अप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थॉट्स एंड ऑल, वो वैसा बाहर ज्यादा. क्योंकि फैमिली ने ऐसा बोला कि इतना पैसा डालता है ट्रैवलिंग में, ये कर लिया कर, इधर कर ले, वो कर. इतना ज्यादा पैसा नहीं डालता हूँ, थोड़ा इकोनॉमिकल ट्रैवल करता हूँ ये सब. हर कोई, अभी तू डेफिनेटली बिजनेस क्लास में तो नहीं करेगा. इफ यू हैव द मनी व्हाई नॉट, बट या आई ऑलवेज से दिस, लाइक कि अगर कोई बोलता है कि वो इतना कर रहे हैं, लाइक भाई उसके पास स्पेयर पैसा है. इफ आई हैड द मनी आई वुड डू इट एज वेल. Why would I stop? Like, अगर तुम्हारे पास spare है, you are not, harming anything, or you are not cutting down on any regular expenses or basic needs. Why not? So you have to plan your finances. Right. Okay, अगर वो तुम कर रहे हो, then you can easily manage your travel. And होता ये है कि अपन जो Indian corporate विशेष साइकिल जो है, उसमें होता ये कि लीव्स नहीं मिलती है. पहली बात तो यार लीव्स नहीं मिलती है, लेते नहीं है एक्चुअली, मुझे ये लगता है. ओके, सो उसमें मेरा ये है ना कि तुम्हें 30 छुट्टियां मिलती है साल. यूज करो. Exactly. लोग क्या करते हैं, उसको यूज नहीं करते, उसको एक्यूमुलेट करते हैं. छुट्टी छाती पे लेके थोड़ी जाने वाले हैं. 4-5 साल बाद दे जस्ट रिडीम इट, एंड इफ दे आर पुटिंग दैट मनी टू गुड यूज, तो फिर ठीक है. बट वो 30 छुट्टियां एचआर को देते हैं. I think you are touching upon the live in the moment part. Seize the moment. So that's, है यूज करो, कल पता नहीं क्या होने वाला है, बट थोड़ा बहुत प्रिपेयर करो. A happy man wants 10,000 things. A sick man just want to be fit and do whatever they want to do, right? So अभी है जो है, यूज करो उसको. while you are able to do things, just to वही है मतलब कि live in the moment, seize the moment and live while you can. हाँ, because life is very unpredictable. आजकल Gen Z बोलता है ना, YOLO,
अनप्रेडिक्टेबल है यार, तो जब तुम कर सकते हो तब कर लो ना। जो करना है। हाँ, कल को पता नहीं तुमको क्या हो जाए, गॉड फॉरबिड किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। लाइक फॉर मी, आई हैव टू लीव माय विकेट कीपिंग बिकॉज ऑफ माय इंजरी नाउ, सो आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट इट। मैं ऐसे रेगुलर टर्फ पे खेलने गया, नी मुड़ गया, अब खेल नहीं सकता ज्यादा। तो you never know, it is very unpredictable, it is very unpredictable, life बहुत unpredictable। तो जब तुम कुछ चीज कर सकते हो, if your pocket allows you to do that, do it, and if it is not allowing, try and figure out try and reach a stage where it allows you, work towards it। हाथ में नहीं मिलने वाला कुछ, तुम हाथ में तो नहीं मिलेगा, you have to find out ways to fund your passion or your hobby। It can be 100 rupee passion, it can be a 1 lakh rupee passion, जो भी है you will figure it out, but you have to hustle for that। तो मेरा यही रहा है कि यार मैं जो अपना प्राइमरी इनकम है उससे मैं इन्वेस्ट थोड़ा करके करता हूँ, एंड स्टॉक मार्केट से मतलब I try to get the funding for my travel through different sources, right, not to my primary source of income। वो उसको उससे अपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो निकालो, but to fund your passion you have to find out different sources of income। Absolutely perfect यार, very well put। Cool, so any parting thoughts, anything, it can be anything, from travel, it can be to life, seizing the moment, 2 lives, 1 second chances, anything that you want to give to the audience listening, watching। They've already spoken a lot, but still, any one concrete thing, or it can be 2 also, whatever। ट्रैवलिंग का ऐसा ही है यार कि पीयर प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे एक ट्रैवल की रील देखोगे तो आपको दूसरे में कुछ और जगह दिखा देगा। करेक्ट। सो आपकी विश लिस्ट ऐसी हो जाएगी कि यार नहीं यार 10,000 हो जाता है पूरा, सेव्ड रील्स में 10 हो जाते हैं, वैसा हो जाता है। बट हाँ, उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चादर है वो, चादर हाँ, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर लंबी हो। लेकिन एक बड़ी चादर को अपने ऐड टू कार्ट कर लो, है ना, एंड वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग योर चादर, बिल्डिंग। बट उतना प्रेशर में आके आप ये मत कर लो कि यार you stop enjoying the process, you feel sad or depressed कि यार ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर peer pressure में आके you take a travel is not the end goal, it is just a source of happiness। There can be other means of happiness also, definitely। like it doesn't always have to be कि मैं तुमको travel से ही खुशी मिलती है, right? मतलब like people work out। Yeah, thank you। थोड़ा this was not planned plug-in। तो हाँ, लोगों को उसमें खुशी मिल जाती है, कुछ लोगों को फोटोग्राफी करने में खुशी मिलती है। सो जो भी है, बट पीयर प्रेशर में आके क्या होता है ना कि यार यू थोड़ा ज्यादा stop enjoying it, you stop enjoying the process। so वही है, just do what you feel like, stop getting influenced by the Instagram generation, machine learning। वो एक और रहता है ना, real versus reality। Life is reality, life is not on your reels। Reels is always filtered, cut, post production होते आता है, editing करके, बहुत editing करके आता है। That's not the always the true story। but वही यार, मैं जैसे बता रहा हूँ कि यार जितनी चादर लंबी हो उतनी पैर फैलाओ, और बड़ी चादर को काट मैट कर लो, and then work towards buying it। उसको खरीदने की औकात बना लो, कर लो। हाँ, बट वही एक जो तुमने उसके लिए बोला कि वो औकात बनाते के लिए सैड मत हो। हाँ, मतलब डोंट बर्न योरसेल्फ आउट टू अचीव दैट। देयर आर 10 डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ दैट यू हैव टू डू। इट्स ओके इफ यू डोंट अचीव इट आल्सो। मतलब तुमने अगर पूरी दुनिया नहीं घूमी तो तुम मर नहीं रहे, कुछ गया नहीं है। हाँ, तुमने स्कॉटलैंड नहीं देखा, स्विट्जरलैंड की गाय नहीं देखी, तो कुछ गया नहीं है तुम्हारे लाइफ नहीं है। हाँ, तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। हाँ, इधर आओ, आरे में चले जाओ। So yeah, as long as your responsibilities are fulfilled, taken care of, and your pocket allows, you can do it। Do what you want। Do what you want। Do what you want with your spare money। Yes। Perfect, yeah। Thank you so much for your time। Thanks for having me। So thank you guys for tuning in, and Tarang is going to be tagged। One fun thing about his Instagram is his Instagram username is Musafiru Yaro, so that's pretty evident about his love for travel। So he'll be tagged on Instagram। You can shoot any travel related questions or anything, he'll be open to answer to them and anything।
Also, recently completed 10 episodes of my podcast. I didn't really think I would complete 10 episodes because I just wanted to be consistent, and I'm glad I'm being consistent with these stories. The one good thing that keeps me going is that, whoever comes on this show, they actually go back and tell me that they found an opportunity to express themselves, and that's what this is all about, expressing yourself. And if any of you want to have a chat, or have anything to express out, please do reach out. Always available. And you might even end up on the other side of the show with me figuring it out. Till then, take care. Cheers. Stay good.